Tugut samala jule tene diri ngata yang topic chik silche zeno tene diri topic pono ata thallus organization in algae son sale. So range of thallus organization in algae zena ata algae se thallus organization ka zuk shitu gyana ngata algae se ngata plant body ka zuk shitu gala ki plant body ngata algae ngata spherical duga या filamentous दुगा यहाँ ता trees गुन plants गुन सोला ता branch system दुगा aerial system दुगा हाँ बोले so कजुक शिकतु ओतेस कोर बांता किया ना सिलचे जनो algae से संगमा संगमा आता यूट्ला चनो की algae they are mostly they are lower plant हाँ बोले lower plant गता जरा चापो तेने ism complex met kya kazam shingata higher plants no jise kata trees mun no plants mun no ngata ma complex system no kom branch system tene leaves tene roots tene on nale fruiting system on ote on cholo ngata kena algae mun ngata tezam ngata complex met kya but simple lower plant no simple primitive type of plants no hala te dang ngata zir anzes pinki algae ngata kena aquatic habitat na duano hago sale तेरे कोई ngata plant body तना तेने organization बोलता ना mostly they are considered as a thallus हाँ बोले so ते फिर ngata algae चिना बोलते क्या thallophyta ना thallophyta group पे नची होती क्या ते plants उन काउन ngata क्या और देमो जो से differentiation मचाई होती differentiation into roots stems ना leaves काउन ngata higher plants अंचात ओते differentiation मचाई होती क्या वाला ते फिर ngata क्या ना thallophyta ना बोलते क्या तेने को प्लांट बॉडी के ना आता थैलस जुत्या सो थैलस पहुंचा के ना जनरली आता अलगे थैलस बुके ना आता यूनिसेलुलर ना मल्टीसेलुलर फॉर्म से ना आता कैटेगराइज चुस्त क्या वाला चीज़ ना आता अलगे कच्ची आता कोई प्लांट बॉडी के ना यूनिसेलुलर युत्या यंग कच्ची आता क्या ना मल्टीसेलुलर युत्या so unicellular forms ngata aspeta champo they are composed of single cell yani ngata cell chikchi ga dupsu kya जैसे ngata bacterial cell ngata हमेशा unicellular है नोको मान वाले यहाँ ता fungi नलता ना ngata yeast nge जैसे पिंगे जा yeast के ना ngata unicellular है नो उन्ना चोला ngata algae ना aspeta champo तेने algae ना ngata unicellular algae आयो क्या तेने ना ngata क्या ना unicellular algae ना ngata motile unicellular non motile जंचिस ngata क्या motile का ना ngata flagella movement with non motile का ngata move शमित तेने मोटाइल फॉर्म से ना आता राइजोपोडियल ना फ्लैजिलेटेड फॉर्म की जुत क्या गला ओना चलो आता मल्टीसेलुलर algae पर आता जापो then they are differentiated into colonial forms filamentous forms heterotrichous forms pseudoparenchymatous forms siphonaceous forms parenchymatous forms यूं आता मल्टीसेलुलर yang के ना आता ये forms गुनो so major portion of the algae they are mostly multicellular हाला colonial forms na आता ना colony मतलब आता group ina दो ना वाला तेना आता नीचे क्या आता further details ना आता दस सिला नो synobium ना aggregated जंचेस हाँ बोले अब synobium ना aggregated form ये क्या तेने aggregated form बोलता क्या ना yang स्ना सुमे क्या palmilloid dendroid rhizopodial सो सारे यूं आता क्या ना aggregated form of colonial सिनो तेना चलो आता filamentous form से आता ना तेने branched filamentous unbranched filaments हाँ बोले branch filament में आता further categorize हो सकता truly branched false branch simple branch branches हाँ बोले त्यो मन पाता कि ना तेने yang algae खचिंग आता कोई habit बो या कोई organization बो thallus organization बो heterotrochous form जो क्या pseudoparenchymatous form जो क्या siphonous form जो क्या parenchymatous form जो क्या सो साले सो मसाता ई उनके ना one by one साचे जनो कजुग रेतुक से कन बो So संगमा संगमा आता unicellular form ये दक्षांगे जमालो वाले कि they are composed of single cell चिकची के डूब सकती है cell चिकची के संग मांग पोक है ना को मेट क्या खाला यानी कोई plant body में आता individual algae चिक individual में आता algae चिक है ना चिये डूब सकती है single cell ला मांग छत group पिना आता unicellular forms तो बानो except में आता rhodophyceae ना phaeophyceae ना carophyceae मान पा
hagole unicellular forms po ngata algae mang chat pen thobano i ngata family sumbu putte sonsale i class sumbu putte. Then unicellular forms nang ye spin ta sangata motile unicellular form kya non motile kya motile sinang that means they have the flagella. Motiles means they have flagella, so they show movement hagole. So ozo se algae na chi kya ngata unicellular motile forms nang ko ngata ke nang particular ngata life cycle particular stage ka ko motile cells form chono chahe ngata ko reproductive cells indo gametes indo या non reproductive cells indo hagole they form motile gametes motile cells. Motile cells era champo that means you kyang te cells unna yampo flagella kya so sale so te flagella jese ngata kya movement chono. So ಈ motile unicellular forms ngata snangi jot kya rhizopoidal flagellated rhizopoidal ngi jalta na ई diagram tagme ka ngata first diagram book he ngata star jik chok sidu wale ote ngata ke na example in ngata rhizopoidal forms hi hagule chrysoamoeba kan bono ई ngata rhizopoidal forms na chi kya single cell kya but kwe daksangata cytoplasmic portion unke na zuga project sonsu kya piloga hagole pilo ngata ke na pointed like structures ngata piloga point project sonsu kya to ngata rhizopod jano chi janole rhizopod onna rhizopod puja singata ke na kwe moments ngata help chono kazuk shangata amoeba ngata move chotala onna chogla ई rhizopoidal form ngata move chono with the help of rhizopods sonsale tenna cholata flagellated forms antana ta kanang unicellular forms ka ngata flagella hagole as an apparatus for the movement hagole ngata movement chola ngata kena sorry appendage for the movement. So movement chola ngata flagellar goes flagella ngata kena unicellular cells ngata kena either anterior portion or in the middle portion या में ngata posterior portion ka ngata present ut kya so sale species ngata tana inang chlamydomonas yang ngata kena phacotus ngata third ngata C khato diagram में ngata C part bolta na that is chlamydomonas. Chlamydomonas it belongs to Chlorophyceae green algae no Chlorophyceae no hala it is the best example of unicellular algae agole unicellular flagellated algae so sale Chlamydomonas tena solata kena Euglena kya Euglenophyceae se so in wanata kena flagellated forms no the unicellular non motile forms yani kaun ngata flagella met kaun ngata rhizopods met kaun ngata movement shocho met to ngata non motile unicellular forms especially ngata kena spirulina no hagole yok pi ngata diagrams tante du wale oto ngata spirulina no a part po spirulina Cyanophyceae members ngata kena belong chono so sale yang chik po ngata kena B part po ngata kena Chlorella no it again belongs to the Chlorophyceae member. So even again unicellular forms no ingata spirulina na Chlorella niska unicellular no but non motile no hago sale. So unicellular forms na ko ingata thallus organization bo uzuk shukyala. We'll move to the multicellular forms ingata multicellular algae speta champo samasang gomata colonial forms kya sada snan nazar tada colonial forms kya hagole colonial forms sirtina ta filamentous kya. So colonial forms means group ka ngata kena aggregate sonsi dubano cell chik man hala ngata cell mang pe ngata kena grouping chana aggregate chana tere to ngata colonies no so sale. So e ngata chi kya algal cell mang po ngata species chik algal cell mang po ngata kena group chano aggregate chano tene khatok pika ngata common ek mucilaginous sheet form chano yani ngata izuk shino pa jese ngata polythene ji nang ku ngata ke na chitong singa ta gyan na la same content ngata gyan na tene o choksik oto ngata colonic choksik irtono so sale oto ngata colonial forms etono sorry e colonial forms ngata ke na snang ni sum jet kya tik ngata ke na synobium no
घूमे तो आता साइनोबियम में ची क्या आता कॉलोनी इन होगा ग्रुप ऑफ सेल जो क्या लेकिन with definite shape and arrangement यानी आता ओते कॉलोनी न आता के ना ग्रुप संसेट करने आता सेल्स गुनाला ग्रुप संसेट क्या पा ते ओते कॉलोनी के ना कोई डिफिनेट शेप जो क्या चाहे को आता स्फेरिकल शेप क्या चाहे आता रेक्टेंगुलर शेप दो या आता के ना पॉलीगोनल शेप दो लेकिन को एग्जैक्ट शेप जो क्या हाला तेने डेफिनेट अरेंजमेंट क्या ते अरेंजमेंट बोने शेप को कोई जिगा माम संसेट ते लगाता साइनोबियम जैसे साइनोबियम में नाकू आता के ना मोटाइल फॉर्म्स होत क्या नॉन मोटाइल फॉर्म होत क्या यानी आता मोटाइल साइनोबियम होत क्या नॉन मोटाइल साइनोबियम होत क्या मोटाइल साइनोबियम सन जैसे आता वोल्वोक्सन होला अगेन चामशिगी मोटाइल साइनोबियम ची होत क्या आता चामशिक ते नाकू वा इंडिविजुअल सेल्स होत ते सेल्स हम आता फ्लैजिलेटेड होनो हागोसले होल आता साइनोबियम बो केना आता चिकचिक होत क्या लेकिन ईच इंडिविजुअल सेल्स दे हैव गॉट द फ्लैजिला जैसे कहता वोल्वोक्सिनो पेंडोरिनानो कहता ई डायग्राम भी कहना ए पार्ट पे तो कहता बॉल जिक चौसिक स्पेरिकल बॉल जिक चौसिक होते बॉल चौस पे चिन्ह आता है ना वोल्वोक्सी कहता इन अंकुक पे ना कहता यूनिसेलुलर कहता सेल्स मामंग पोत क्या चिक सोचते हाँ बोले अरेंज सोचते कहता डेफिनेट कॉलोनी जिगी ना कहता अरेंज सोचते क्या सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोटाइल साइनोबियम हागोसले तेना चलो नॉन मोटाइल साइनोबियम मिलता ना आता के ना योग पोला आता बेस्ट एग्जांपल इज स्केनिडेस्मस एंड हाइड्रोडिक्टोन बोलता ना आता दुगले सेल्स को आता रेक्टेंगुलर फॉर्म में ना अरेंज हो से दुगले मिनुगले रेक्टेंगुलर फॉर्म में ना विद डेफिनेट अरेंजमेंट हो क्या डेफिनेट शेप चिक दुगले लेकिन दे आर नॉन मोटाइल बिकॉज दे डोंट हैव फ्लैजिला सो नॉन मोटाइल साइनोबियम ही एग्जांपल है होता हाइड्रोडिक्टोन स्केनिडेस्मस नॉन मोटाइल फॉर्म कॉलोनी से स्टिंग नंगाता यंग अंगाता सन चिकचिगेनो साइनोबियम स्टिंग ना कॉलोनियल फॉर्म चिकचिगाता एग्रीगेटेड फॉर्म्स सो कॉलोनी नंगाता स्नांगी जुतेनो साइनोबियम दसंगाता सन नजरकनबो निस्पंगाता एग्रीगेटेड फॉर्म्स अंगाता चिउक्या इनंगाता के न इरेगुलरली अंगाता एग्रीगेट सोसोक्या हागोले irregularly ngata ke nang dakse ngata sainobium chokla met pa I ngata dakse I azugi nang hala sainobium chokla met pa I colony na chiut kya ngata irregular ngata aggregation ut kya yani ina ngata definite shape met kya definite arrangement jing met kya ngata cells guni ha gole so I aggregated forms na again sna sum ut kya palmilloid then dendroid then rhizopodial palmilloid यांची होत क्या कहता नॉन मोटाइल सेल्स कुन irregularly कहता aggregate सोचत क्या grouping सोचत क्या हाँ बोले then they are embedded in a gelatinous substance कहता mucilaginous कहता covering चिंग mucilaginous covering का जो क्षेत्र ना कहता स्पेशल कहता क्या ना gel like substance हाँ बोले gel like कहता covering जिंग नंकु कहता क्या ना सेल संग कहता चिक सोचत क्या group सोचत क्या हागोले त्यो लगाता palmilloid forms ano palmilloid ngata colony no palmilloid colony ngata best example bono ngata tetraspora ikata first diagram a na b ngata kena tetraspora se diagram no dugale ikata elongated chingata elongated ngata bichik chi so shik make otyo ngata colony chik chigino hagole gelatinous cell nankuga ote nankuga ngata kena cells mamang pot ngata tetraspora se so ote ngata kena group song chik song irregular grouping irregular aggregation within covering of gelatinous substance that is palmilloid then dendroid ngata chut again ngata कोई number of cells na shape na size पहुंचा variable होती है ina dendroid forms dendroid forms ना स्पेशल ngata आता ना इनंग ये डायग्राम में आता ना सी पार्ट पो दुगले सी पार्ट पो खतो ngata loma ngi sok yok pula ngata kina thread chi duga ote ngata colony chik chigeno hagole ote loma chok jiske na chi kya ngata again cells gun ngata unicellular algal cells gun ngata chik so kya te na kuwa hagole grouping so kya then
they look like a microscopic tree. Ha gole ngata I dendroid form ngata chiut kya colony ke na ngata plant jik chok singa ta thon khala plant jik chok singa ta tree jik chok singa ta thon thami gle c part polata na. So oto chi no dendroid forms of colony no kananga ta ke na large number of unicellular forms aggregate chano mucilaginous substance chik nankuwa and they give an appearance of microscopic tree. Hagol ngata changma ji chosi ya plant ji chosi chun chosi thon ko de colony. Example in ngata chrysodendron is the best example in case of dendroid forms. Then to ngata rhizopodal forms. Again rhizopodal forms in chut kya cells ngata aggregate so kya. Hagole aggregation mo ngata ke na koi ngata rhizopodia se ngata thute hagole cells ngata ke na united sonso kya through rhizopodia. Ab rhizopodia chin also can be the spin they are in cytoplasmic projection philo alta sangata ke na projection chano ta cytoplasm bo hago sale ote ngata ke na ote ngata kwe rhizopodia through ta chikna chik thuk stot kya जैसे होता क्रासी डायस्ट्राम में नोपा डी पार्ट बोलता ना ये डायग्राम में नंगे जे डी पार्ट बोलता कि मतलब कॉर्नर में होता ना डी पार्ट बोलते वाले स्टार लाइक सेल्स टू स्टार लाइक सेल्स और द स्टार लाइक सेल्स पिछी ना होता कि ना सेल्स विद राइजोपोडिया नो राइजोपोडिया नीस का थुक्स दे वाले सो ओते राइजोपोडिया नीस के ना कि ना थुक्स दे तो ना बोलता join chano and they form a colony and that colony is known as rhizopodial colony. Clear so all. Then we'll move to the filamentous forms. Ta colonial form was harta no hala. Then now filamentous forms na da chi kya filament jara je pota pata no ki filament jara pota they are thread like or hair like structures. Thread like structures jo ngata khera plant body ngata algal body ke na ring mode kya ngata ke na threads ogla hagole and these filamentous forms are formed by division of repeated division of cell in single plant tangata cells ngata plant chicken divide chana tanne ka ngata sagan chano pa cell hagole tene ote ka ngata ke na body ke na koi filamentous gurano thread like gurano hagole because of division of the cells in single plant chicken ngata divide choste ठीक रामी रगले त्यो लगाता के ना filamentous forms ano. So filamentous forms na again ngata branched या unbranched kyak या चिंगता filament bo tasingata thread like body ke na katanga sir ring mode kyak changata side la branching me dala या में ngata branch chot kyak hagole unbranched filaments ngata aspirata na tene unbranched ngata ganang branching me dala just straight ngata filament dot ओते नंगाता के ना फ्री फ्लोटिंग होत्या या yang चिंग ngata ke na attached to substratum ngata chwinangku anokpa chwinangku ngata ote filamentous body ya chingata freely floating hoत्या korang khato ngata ke na chwinal ding endu anok jese ngata ke na spirogara anok ई डायग्राम भी गलता ना ए पार्ट पहुंचा स्पायरोगारा से दसे चलो कोई प्लांट बॉडी नो स्पायरोगारा से हाँ बोले सो स्पायरोगारा इज एन एग्जांपल ऑफ unbranched free floating element free floating algae unbranched free floating algae yang chikchi क्या था substratum का attach होंसे यानी कहता चुनंकु का योदु क्या लेकिन को चुनंकु का से का attach होंसे वानो हाँ बोले तो उन जैसे कहता example नो Eulothrix and Odigonium free floating forms से ना कहता कि ना कोई body बिल्कुल straight होती क्या चांग differentiation में क्या गला लेकिन काउन ngata ke na substratum ka attach chat teoni ka ngata kwe end bi ka hala juk bi ka ngata se ka attach chat ote ngata cell chik chik ngata differentiate so kya te ngata whole first jano HOLD hold FAST first whole first ya menata rhizodial cells which helps these algae to attach to the substratum ha bole ote whole first bi ngata ke na mostly ngata chlorophyll yomano so chloro ngata kena photosynthesis chomano hala ko main function bachi no anchoring attachment joches all the plant body ngata se ngata kena kha chukches ote ngata kena unbranched ngata ka attach free floating node free floating forms bina yotya
so sale yung ta unbranched puno ter branch spread on a branch filamentous forms a branched kaun ngata alte alge un kaun ngata filamentous jot lekin branch jot ote na ngata khena snang isum jot ya sichi ngata khena falsely branched ya sichi ngata truly branched agule falsely branched truly branched a falsely branched jena chino khala generally ngata chi chano filamentous alge ot kya elongated filamentous ngata ring mo chik chot khala ओते ngata kenang filament po ngata kai death chana decay chana ngata break chana hala kwe filament po ngata trichomes jano pa ngata generally trichomes jano ya filament jana algal trichomes po algal filament po ngata break chana due to कोई भी ngata mechanical ngata injury jaste ngata death and decay jaste hagole so jung ngata intercalary portion jikana ta kenang break chana tenichi chano ओते ब्रोकन एंड भी केना ता के ना ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ना फॉर्म चलो हा बोले का कना ता ब्रेक चेते केना ता यंग साइड लता से ता के ना branching तो फॉर्म चलो दे आर नॉट रियल ब्रांचिंग दे आर नॉट ट्रू ब्रांचिंग बट दे लुक्स लाइक अ ब्रांच्ड हा बोले सो ओ जो से ना ता के ना फॉल्स ब्रांच्ड फिलामेंट सिस्टस यहां ता फॉल्सली ब्रांचिंग फिलामेंटस algae जैसे होता स्कीटोनिमा ई ngata diagram pikena C part bolta na nge chala last ngata C part bolta na schitonema se ngata exam diagram bono and schitonema is an example of falsely branched filamentous algae so le falsely branched pe jana ko kwe branching bo kena real branching mano but it is formed after the injury को ngata injury cheddo ya ta death cheddo broken cheddo kwe filament bolte ne te na ta ke na philo alta se ngata branch like structure ngata form char wale to ngata ke na false branch jano then nispar ngata truly branched ngata exactly ngata ko naturally ngata branching form chano khala ina ngata branching bunam form chano jab ngata cell division bo ha gole ngata skana plain chicken division chana filamentous form chame dale cell division ngata plain chicken macha ke ngata side ngisum jab ngata divide chana hagole jese ngata plain e plane ya chena tene ngata perpendicular ngata plane nang cell divide chana tene chi chana ngata branching form chana lateral branching ngata form chana so o chosungan yonna o chosinga azug yonna tene tole chi ngata truly branched hagule truly branched ngata zestes so samasum ye tena so ngata ke nang daksinga da simple filaments ngata simple branch filaments sangano simple filament ina ngata branching chano lekin chiono ina ngata algae ke nang kwe substratum mika ngata se ka ngata attach sono remain ono hamesha ngata attach lusano but ओते ngata kwe basal cell भी kana hala basal cell kana ngata ke na basal cell ka ngata attach so tyoman pa baki kwe young cell changme kana ngata ke na khato galta se ngata ke na aerial portion galta se branching arisano ओते चोसुना ngata ke na tene simple branched filaments etano जैसे ngata example no cladophora ina ngata b part po ngata ju adu wale ओते ngata cladophora se diagram no yogi do ngata basal cell bono tene basal cell ngata ta yot kan sangme kana ngata branched ngata lateral branching arisano so this is about the branching ngata branch filament so next third one hota heterotrichous forms puchino heterotrichous forms pota check sigma advanced form dino agole ina ngata kena branching un kena ngata yotya lekin algal body kena ngata differentiates also kya thallus po they are differentiated into prostate and erect system in prostate and erect system ngata gazuk shukya especially ngata daksa plants guni ngata roots no pa roots na khato part chigami no ngata koi aerial part po stems and leaves o chola ina kena ta
prostate system yada seka chegi utya tene erect system khato alta sena system utya to lagata heterotracheous forms and also yodna both prostate and erect systems are well developed. For example ngata kena fistula ya ectocarpus e ectocarpus indo yangata kena fistula indo te ngata kena prostate system bona erect system bo well formed utya well developed utya जैसे ngata ये डायग्राम में कहता ना ये डायग्राम ए कहता ना ए डायग्राम भी का दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टोकर्पस डायग्राम नो हा बोले कोई प्रोस्टेट सिस्टम बदु आता के ना से कहता गजुक सिंगाता हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ओतो गता कोई प्रोस्टेट सिस्टम बसनांत नो तेने खातो वालता सिंगाता के ना ब्रांच्ड एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर गता स्पोरेंजियम खुरते दुगले ओतो कोई के ना इरेक्ट सिस्टम बोनो सो ओ चलता प्रोस्टेट सिस्टम एंड इरेक्ट सिस्टम इन योजना heterotracheous form justice जैसे ngata baki unin altana Drepernaldiopsis yang ata kenang Stigoclonium yang ata collicate each amena ta chino they also show progressive elimination of prostate system yani prostate system kule ngata metkan anset ha gole goma ngata well develop yono kule ngata kenang degenerate chano त्यो ngata kenang e examples kun ngata kenang Drepernaldiopsis yang ata Stigoclonium yang ata collicates kunenang hagosle you heterotracheous forms then cholo next thallus organization bono ata pseudo parenchymatous habit and chio filament halangata kena central filamentic yangata axial filamentic ata kena branching is a mangpo chano hala ki koi branching is a mangpo chano ki it forms an parenchymatous like structure hagwale for example ngata you can example jinna dasada Batrachosperma mino yangata Polycephalus no so sale e unyangata kena central ngata filament bigana is a mangpo branching chano hagole branching is a mangpo chano ki it looks like a parenchymatous structure te fyangata o so yodna pseudo parenchymatous structure jano central filament bigana ta branching mangpo profuse branching so sata kena it appears as in parenchymatous structure tene kaltes ngata single ngata filament ikana ta branching chena uniaxial जैसे ngata Batrachosperma mino b part pono kaltes ngata branching mangpe kana yang ngata filament mangpe kana ngata branching chena tene to ngata multiaxial just example ngata Polycephalus last diagram bo c diagram bo Polycephalus eno so then next ngata thallus organization bo ngata siphonaceous forms heterotracheous form tene pseudo parenchymatous tene siphonaceous forms ne chu kya thallus po branched kya aseptate kya multinucleate agole branching kya thallus po ta kya na filamentous branch kya lekin nanku khwe kya na ta septation met kya nanku ta cells unat alag medala chikchig kya agole aseptate tene multinucleate so aseptate person obviously ngata kya na nucleus nyam pot no kala te pyang ta multinucleate no example no for example ngata Wucheria ngata to bano hagole yang ta kya na Botrydium Wucheria ngata kya na ma branching yotya as compared to ngata kya na Botrydium so branching with without any septation plus ngata kya na multinucleate na to ngata kya na siphonaceous forms is just then last one is parenchymatous forms ab parenchymatous forms of algae they are considered as the most advanced form agole advanced form chi piano because ngata ina chi kya filaments po agole algal filament bo ngata kya na har jagah na multi ngata kya na directional ngata kya na ko division chano hagole multi directional division chano sombachi ngata kya na multi direction ya kya na koi branching form chano hagole plus they thallus pota kena ultimately ngata kena ko folius it appears as in folius
foliose means ngata ken chisano bearing leaf like structures. Hagole they do not exactly bear leaves, but leaf ngun cholata ken kwe thallus pawata ken foliose gurano. Hagole jaga sinanda flat and foliose gurano, tubular gurano ma complex gurano ngata plants ngun chola branching type kya branching ngata ken leaf like structures ngata appears chano. Then also ngata complex form yodna tene parenchymatous forms which is जैसे ngata kena alva no kala yang ngata kena sargassum no laminaria no agwale each sang ngata kena advanced form no parenchymatous forms no agwale sargassum alva laminaria. So inna na pota kena thallus organization in algae ngata